हाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। द टॉपिक फॉर टुडे इज पिलर्स ऑफ इन्वेस्टिंग। And just to give you a small introduction, I am Rahul Chauhan. I'm your shareholder strategist. And I have been practicing growth and value investment style for almost 14 years now. उसके initially 6-7 सालों में I had faced a lot of struggles. I learned a lot of things और उसके बाद से I kept on building the investment style for myself, and the results I wanted, I have finally started to achieve them. So that's a brief about myself. So coming back to our today's topic, which is pillars of investing. I am taking my 5 pillars of investing which I personally follow. There are many, but these are the 5 most important ones which I personally feel are very much required to look before we decide to go ahead and invest in a particular share. Right? So the first one is debt, which is karja, because debt can make or even break a company. Do you remember a company with the name Jet Airways or Kingfisher Airlines? So Jet Airways और Kingfisher Airlines दोनों ही हमारे शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड थी, राइट? एंड बोथ ऑफ देम वर हेविली इन डेब्ट्स. उनकी बुक्स के ऊपर कर्जा बहुत था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बिजनेस दे वर इन which requires a lot of capital coming in, right? And that's why when the difficult times comes, it becomes very difficult for companies to pay interest. For example, अगर हम आज का टाइम ले लें, in today's scenario, we have got many companies which may find it difficult to pay interest because आज के टाइम पे revenue कम है, market में demand बहुत कम है, and you have to eventually pay those debts, isn't it? And that's why it's important to understand that you need to have debt levels which are under your control. So there are 2 ways you check your debt levels today. First one is debt to equity ratio. This is one of the ratios which I personally follow. Debt to equity ratio को अगर हम simplify करें, it can vary as per industry कि किसी specific industry के लिए debt equity ratio बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि initial investment उस particular business में बहुत आपको हैवी करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सेस लोन लेना पड़ता है. बट दैट्स हाउ द इंडस्ट्री डायनामिक्स आर, राइट? बट द आइडियल लेवल जो एक इंडस्ट्री में फॉलो होता है, देयर आर ऑल द लेवल्स, देयर पीपल ट्रैक दीज नंबर्स विद सर्टेन सेट ऑफ आइडियल कि ये हमारे लिए एक आइडियल फिगर है. पीपल फाइंड दैट किसी के लिए 2 का नंबर अच्छा है, किसी के लिए 1 का नंबर अच्छा है. जेनरिक सिनेरियो आता है कि any debt level which is below 1.5 is still at a comfortable level. However, I personally use a debt level which is below 1, and the lower the debt equity ratio, the better it is. And हम इसमें से एक चीज समझने की कोशिश करेंगे कि debt equity ratio को जो हम चेक करते हैं, most of the financial companies and banks would not be considered when we are using this particular ratio because उनका debt equity ratio हमेशा 3+ आएगा. That can be 4, 5, 6 up to 7. क्योंकि these companies business model are such that they need to take debt and then pay you guys loan, और उसके बीच में जो इंटरेस्ट वो कमाते हैं जिसका गैप होता है, that becomes net interest margin. So that's a different business model. So जब भी आप debt equity ratio को आइडेंटिफाई करेंगे और आप 1.5 के नीचे जाएंगे तो आपके मोस्टली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनी इससे ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेशन से बाहर चले जाएंगे. सो यू जस्ट नीड टू कीप, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट दैट डेट इक्विटी रेशियो में आपको बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग नहीं आएगी. अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज बिसाइड्स डेट इक्विटी लेवल्स रेशियो, यू नीड टू आल्सो चेक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में क्या होता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज बेसिकली योर अर्निंग्स विच इज बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. आपकी जो भी अर्निंग है इंटरेस्ट देने से पहले और टैक्स देने से पहले, उसको आप डिवाइड कर लो द टोटल नंबर ऑफ इंटरेस्ट विच हैज टू पे पेड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. लेट्स से आपको एक पर्टिकुलर 12 मंथ्स के पीरियड में कितनी आपकी अर्निंग्स रही है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कितना आपको इंटरेस्ट पे करना था. जब आप उसको डिवाइड करोगे तो एक नंबर आएगा. नाउ दैट नंबर इज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. आइडियल नंबर यहाँ पे जो है is any number which is above 3. So remember, if it's debt equity ratio, the number has to be lower.
but if it's interest coverage ratio, the number has to be higher. So ideal number 3 है, but minimum requirement जो बहुत सारे लोग कहते हैं is 2. I personally follow 3, right? Any number which is above 3. और इन दोनों रेशियोज में से अगर मैं ज्यादातर किसे फॉलो करता हूँ तो आई पर्सनली फॉलो डेब्ट इक्विटी रेशियो, बट यू शुड बी कीप अ चेक ऑन बोथ द नंबर्स, क्योंकि दोनों अपने में कहानी बताते हैं, एंड वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर स्टोरीज. So first one becomes debt. The second one, which I personally find very interesting and important for pillars of investing, is industry and macroeconomics. You know, let me tell you something. CDs and DVDs got replaced. Why? Because the companies which were manufacturing them were doing great. However, they were not able to see that there can be any substitute product which may come up and their market may get killed. So अगर आपका एक substitute product market में आ रहा है and उसकी replacement आ रही है, so you always need to keep a check that any company which you are investing into or any industry which you are entering into, उसका कोई substitute तो नहीं आ रहा है market में, right? Similar thing happened with companies which were into you know cameras, because आज के टाइम पे हम एक नॉर्मल कैमरा यूज नहीं करते हैं. पहले जो कैमराज आते थे, दे वर यूज्ड टू हैव फिल्म्स इन इट, और हम उनको क्लिक करते. इफ यू रिमेंबर, आई मीन दोज वर हैवी कैमराज व्हिच यू यूज्ड टू कैरी. नाउअडेज इट्स लाइक लाइटर कैमराज, और वी मोस्टली यूज मोबाइल कैमराज बिकॉज उनकी पावर इतनी, उनकी जो कैपेसिटी वो इतनी अच्छी हो गई है. सो दैट्स हाउ द सब्स्टिट्यूट्स जब प्रोडक्ट आते हैं, सो वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दैट इस टाइप की रिप्लेसमेंट अगर आ जाए तो आपका मार्केट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है. So you need to always check on that. Another very interesting point when it comes to industry and macroeconomics is कोई political compulsion तो नहीं है. For example, जब हम political compulsion की बात करते हैं तो बहुत सारे states में liquor ban है कि दारू पीना officially आपको allowed नहीं है. There are certain ways you need to get those licenses for drinking liquor. Now that's a negative point for any liquor liquor producing company. Similarly, बहुत सारे political compulsions की वजह से we have seen in the past and in certain scenarios कि आपका लोन वेवर्स आ जाते हैं. जैसे पीछे एक बार आया था कि फार्म लोन वेवर हो गया है, पॉलिटिकल इशू बन जाता है कई बार, and there many times it becomes even election campaigns, right? So in these kind of scenarios, banks, financial companies जो loans provide कर रहे हैं, वो सारा लॉस उनको बियर करना होता है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो क्या, उनका जो मूल प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी वापस नहीं आ रहा है, राइट? सो ऐसे केसेस में वी ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दैट इफ दीस काइंड ऑफ सिनेरियोज कम इन, व्हाट कैन बी अ फैक्टर ऑन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और और अ पर्टिकुलर सेक्टर इटसेल्फ. मैक्रो इकोनॉमिक्स हर एक इंडस्ट्री का और बिजनेस का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, सो हमें वो समझना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, फार्मा इंडस्ट्री का जो जेस्टेशन पीरियड है, कोई भी एक मेडिसिन, वैक्सीन, दवाई बनती है, उसकी प्रोडक्शन से उसके इनिशियल टेस्टिंग फेज से लेके और उसके मार्केट में आने तक का टाइम होता है 4 से 5 साल. सो इफ द जेस्टेशन पीरियड फॉर एनी फार्मा कंपनी इज 4, 5, 6 years, even more than that, right? So do we have that kind of holding capacity to understand? And there might be chances that the product may fail, it don't take off. There might be certain regulations इसकी वजह से, बहुत सारे केमिकल्स की वजह से दवाइयाँ बैन हो जाती हैं, right? There are certain examples out there in the market. So the risk remains high. Having said that, there are many pharma companies which are able to deliver good results. Similarly, अगर हम travel industry की बात करें तो especially after COVID and Corona, the market size because of lesser demand has reduced in general. अब ट्रैवल कंपनीज का मार्केट साइज रिड्यूस हो गया, तो उसी हिसाब से उस इंडस्ट्री का एक अलग से ट्रेंड हो गया है. और आज के टाइम पे अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर एक और देखें तो गवर्नमेंट हैज बीन फोकस्ड ऑन एजुकेशन सेक्टर, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, राइट, इट सेज दैट यू नीड टू फोकस विद मोर देन 6% ऑफ जीडीपी ऑन एजुकेशन इटसेल्फ. अभी तक हम 3% मुश्किल से कर पा रहे थे. सो इफ द गवर्नमेंट इज डबलिंग द अमाउंट देयर, इट हैज टू कम आउट फ्रॉम समवेयर एल्स, राइट? So that's an interesting factor. Another is that government is again focused on defense sector a lot, especially when it comes to defense sector, when it's कि हमारा प्रोडक्शन विद इन इंडिया होना चाहिए, डोमेस्टिक डिफेंस सेक्टर को हमें बूस्ट करना है. सो जब गवर्नमेंट ऐसे फोकस एरियाज बनाती है तो उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का मैक्रो इकोनॉमिक चेंज हो जाता है.
सो ये चीज़ हमें फॉलो करना थोड़ा अच्छा रहता है हमारे लिए. Another pillar of investing which I personally feel is most important is numbers. Because I personally feel numbers don't lie. We just need to find the right and we need to catch those right numbers, right? कुछ numbers जो हमें हमेशा track करने चाहिए, sales revenues, are they growing? Few other points is like profit. Is it there? Profit है भी या नहीं है, right? अगर loss है, so we also need to understand if there is loss. Is this loss because the company is investing the money back into the business to grow the business in future, which is a good thing. So हर एक loss बुरा नहीं, खराब नहीं होगा, बुरा नहीं होगा. There can be different factors around it. Or the loss is because it's a pure business cash loss. So वहाँ पे हमें एक idea लग जाएगा कि how to follow those numbers. Similarly, we need to understand cash flows कि जो हमारे numbers हैं, profits हैं, वो सिर्फ books में नहीं, हमारे बैंक में वो पैसा आया. बहुत बार क्या होता है, हमने जो भी प्रॉफिट्स और नंबर्स जनरेट किए हैं, हमने वो क्रेडिट पे दिए हैं, वी हैव नेवर रियलाइज्ड द कैश इनटू आवर बैंक अकाउंट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट कैश फ्लो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग नंबर्स, राइट. सो उसके अलावा हम हिस्टोरिकल नंबर्स दे सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ क्या रही है पास्ट में प्रॉफिट ग्रोथ कैसा रहा है. अगर कंपनी डिविडेंड पे आउट करी तो उसका पे आउट स्ट्रक्चर कैसा रहा है. they should be ideally reducing debts. उनके ऊपर कर्जा रिड्यूस होते आना चाहिए. उनका रिटर्न ऑन एसेट क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है. मे बी विल टॉक some other day about these numbers and details. But this is the important pillar which I personally feel that numbers should be tracked properly. Then comes another interesting and important point which I personally feel is business and industry cycles. Now, many industries, especially when it comes to commodities, follow certain set of cycles. So businesses जैसे sugar, steel, real estate, shipping industry, यहाँ पे इन सभी इंडस्ट्रीज में ब्रांड को बिल्ड करना बड़ा मुश्किल है, राइट. बिकॉज कंज्यूमर का फोकस है प्राइस पे rather than any particular brand. Just to give an example, आप किस टाइप कौन सी शुगर खा रहे हैं, यू हार्डली मैटर्स वेदर इट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय मवाना शुगर्स और धामपुर शुगर, राइट. इट हार्डली मैटर्स टू यू. सिमिलरली अगर आपको सीमेंट लेना है, एक पर्टिकुलर XYZ ब्रांड नहीं मिल रहा है, तो आप ABC ले लोगे. बिकॉज या आप ये देखोगे यार दोनों अगर एक जैसे हैं एंड आई एम हार्डली एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ द प्रोडक्ट्स, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत रिड्यूस हो गया है, ओवरलैप्ड है. सो वहाँ पे आपके लिए जो मेजर कंसिडरेशन आता है, सस्ता कौन सा आ रहा है. अगर सब चीज इफ एवरीथिंग इज felt similar to the customer, you will only go the pricing levels, right? So इस टाइप के business आपके commodity business होते हैं. Now business cycles are actually like time frames. कि there would be a time which would be demand, very high demand, very high boom in a particular industry for few years. Then there will be dullness for few years. कि पहले बहुत अच्छा डिमांड रहा, फिर थोड़े टाइम के लिए लीन सीजन आ गया, फिर से डिमांड पिकअप हो गया एंड दोबारा से लीन आने लगा. सो यहाँ पे जो ग्रोथ है कंपनी का, दैट बिकम्स क्वाइट इरेटिक. उस वजह से क्या होता है दैट द प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी एक्चुअली कम्स अंडर प्रेशर. क्योंकि एक टाइम पे बूम हुआ तो आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया, जब डलनेस आ गई तो आपके प्रॉफिट्स से हो सकता है आप लॉस में चले जाओ, बिकॉज इंडस्ट्री का साइकिल ऐसा है. और ग्रोथ के लिए यू हैव टू बी डिपेंडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन गुड इकोनॉमिक कंडीशंस. सो अगर आज के टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है, मार्केट की एनवायरनमेंट अच्छी नहीं है, तो यू मे नॉट बी एबल टू ग्रो इन ए वे दैट यू वुड हैव लाइक टू ग्रो, राइट. सो इट इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स मोर देन योर इंटरनल फैक्टर्स. So that becomes our industry and business cycles, which is another pillar of investing. Now the last one and the final which I personally follow is management. So I'm asking you another question. Have you heard about the name Ratan Tata? And what are your thoughts about Ratan Tata? I mean, it's a great name, right? And we always follow what Ratan Tata does. So when it comes to management, we need to realize that is it good for the business or is it bad for the business? Now, how do we define that any management can be bad? Because management has a very important role to play. उनकी वजह से business बहुत बड़ा बन सकता है, उनकी वजह से business बर्बाद भी हो सकता है. So how do we follow whether a management is good for the business or not? We need to understand that
उनके पास्ट में जो उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्शंस दिए हैं या जो उन्होंने कहा है, they mean what they have said, right? So if they have said that they would be doing certain investments and that's not come up, so it's a question mark. If they have said that they are doing such a good work that the profit margin should increase but it's not increasing, or the sales should increase and it's not increasing, एक दो बार का chance हो सकता है, but if it happens regularly, then it's a red flag. Similarly, if the management is selling their own personal stake फ्रॉम द बिजनेस, कि वो खुद तो अपना स्टेक मार्केट में, ओपन मार्केट में बेचते जा रहे हैं, वो हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से चेक कर सकते हैं, बट यू नो एंड सो उनका इंटरेस्ट मतलब उस बिजनेस के अंदर कम होता जाता है. सिमिलरली वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, आर देयर टू मेनी सब्सिडरीज फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस. अगर उन्होंने बहुत सारी सब्सिडरीज बनाई है, तो उससे क्या होगा कि दो सब्सिडरीज वुड बी मोस्टली इन सिमिलर लाइन्स, व्हिच मींस दे वुड बी मोर इंटरेस्टेड इन कंपनीज in which they have more control, 100% shareholding उनके पास है, and they would love to have business going to those companies than coming to that company which is listed in share market. तो उन्होंने अगर subsidiaries बनाई है, if they are in mostly in similar line of business, then it's a big red flag for that particular business, right? Then there are certain other checklists which we should be following. Something like the government has prescribed a certain limits for their salary which they can withdraw. Are they regularly increasing those levels, right? Then there are certain CSR activities which they need to do, and they need to do it as per government guidelines. क्योंकि एक certain set of percentage है जो अपने net profits का CSR activities में spend करना है. I understand कि initially companies may find it difficult, but if they have not been able to do this particular activity for some time now, and it's a regular scenario for them, then it's a big red flag, right? So these are few examples of red flag situations where management is not abiding with law, they are not abiding by ethical standards. So those can be red flags, right? You remember banks like Yes Bank or DHFL, they had bad management, and that's where even they had very good businesses, they had good business models, but eventually they failed the investors because of these reasons. And it's very simple for us to understand. आप किसी भी चीज को जीरो से मल्टीप्लाई करोगे, you will only get zero as a result, right? So that's the same story when it comes to business. So if the management is actually a big no, the end result will be a no. So these are the 5 pillars of investing which I personally follow. Those are debt, those are industry and macroeconomics, numbers, which is very much personal to me, business and industry cycles, and management. Let's just sum up these 5 points. Debt, we should be checking on debt equity ratio with and in interest coverage ratio. In industry and macroeconomics, we talked about substitute products. We also talked about political compulsions जो हो सकती हैं, या कुछ macroeconomic factors जो एक particular industry के लिए हो सकते हैं. Then we talked about numbers where we discussed on sales, revenue, profit, cash flow, among other things. फिर हमने बात की थी business और industry cycles की, क्योंकि बहुत सारी commodity businesses and industries की cycle बनती है, कभी उनका बूम आता है, कभी उनका डलनेस आती है. So जो एक cycle पूरी है, we just try to understand those cycles and the kind of impact they might have on the profit levels for a particular business. And yes, finally the management, is it good or bad, and how do we keep check on the management, right? So these are the few things which I personally wanted to discuss with you guys. Till then, see you, take care, and bye-bye. Thank you.